Hello class. Today we are going to discuss about fundamental theorem of arithmetic. Okay. So before we start the topic, we will discuss some point. The first point is composite number. What is composite number? The number which is divided by itself 1 and any other number means जो नंबर खुद से डिवाइड हो 1 से डिवाइड हो और अदर किसी नंबर से डिवाइड हो फॉर एग्जांपल 9 which is divided by 3 से डिवाइड होता है 9 एंड 1 3 से डिवाइड होता है 1 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा एंड ऑल्सो itself means 9 खुद से डिवाइड हो okay so these number are called composite number. Now the next prime number. What is prime number? The number which is divided by 1 or itself. For example 3 5 2 7, these all are the prime number. Okay, now the statement of fundamental theorem arithmetic. This is the statement. What is this statement says? This statement says every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. मतलब कहने का इसका ये है कि कोई भी अगर नंबर होगा कंपोजिट नंबर उसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, और उसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन निकालेंगे और जो क्या होगा एक यूनिक होगा. फॉर एग्जांपल 6, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा 3 इंटू 2 और वी कैन राइट 2 इंटू 3. ओके, नाउ सिमिलरली 50, how can we break 2 25 5 5 5. Okay, so we can write 2 into 5 into 5, 2 into 5 into 5, or 5 into 2 into 2. चाहे ऐसे लिखे या ऐसे वैल्यू तो सेम ही आएगा ना. सो दीज आर द composite number which is factorized by the prime number. ओके, मतलब कंपोजिट नंबर को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसका तो वो फैक्टराइज करेंगे. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद तो इट विल बी अ प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन. ओके, एंड वी कैन सॉल्व इट इन अनदर वे. इफ द वैल्यू इज बिगर, बड़ा वैल्यू होगा देन हाउ व्हाट वी विल डू. फॉर एग्जांपल वी हैव 320. ओके, so how can we solve it by prime factorization method? 2 multiply 160. Okay, now we break the 160. 2 multiply 80. Similarly 2 multiply 40.
2 multiply 20, 2 multiply 10, 2 multiply 5. Okay, so our value will be the factorization of 320 will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5, means 2 1 2 3 4 5 6, 2 के power 6 multiply 5. This is the our factorization. Okay, आप लोग ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. I also had discussed in class 9th also prime factorization method. ओके, तो ऐसे इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं. क्लियर? ओके, here we have another statement. For any integer a and b, means any two integer a and b, means कोई दो इंटीजर नंबर है a b, then HCF of AB, highest common factor of AB, multiply LCM of AB इक्वल टू A इंटू बी. मीन्स जो HCF होगा AB का और LCM होगा AB का, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल क्या होगा, A इंटू बी के. ओके, सो वेयर यू हैव अ एग्जाम्पल. फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method and find their LCM. सो फैक्टराइजेशन से हम लोग 96 और 404 सॉल्व कर दिए. सो 96 इक्वल टू 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3, एंड 404 इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 101, 2 के पावर 2 multiply 101. Now what is the common between these two factorization product? 2 के पावर 2 और इसमें भी 2 के पावर 2. We have 2 के पावर 2 in common. So HCF of 96 and 404 equal to 2 के पावर 2 equal to 4. And what is the we have to find their LCM. So according to the formula, we have HCF of A into B, HCF of A into B equal to 4, and we have A into B, so we have to find out LCM of A into B. Okay, so we put the value on the formula. So HCF of A into B equal to 4 multiply LCM of A B equal to A into B. What is A into B? 96 multiply 404. Okay, now LCM of AB equal to 96 multiply 404 upon 4. Clear? So when we solve it, it will be 101. So 96 into 100, 9600 and 1 means 96. 9600 plus 96, 9696. Okay, so if you want to check according to the formula, HCF is 4, LCM is 9696, and A into B means 96 into 404. Value, both value will be equal. If we multiply 9696 multiply 4, 6 4 is 24, 4 9 is 36, 6 4 7,
36, 37, 38, 38784, 38784. Okay, so both the value of SCF and LCM will be equal. SCF multiply LCM equal to A into B. Clear? This is the solution. Here is another example. Find the LCM and SCF of 12, 15 and 21 by applying the prime factorization method. Okay. By the prime factorization method, we have to find the LCM and SCF. So these three are the factorization. So 12 equal to 2 square multiply 3, 2 into 2. 15 equal to 3 into 5 and 21 equal to 3 into 7. What is the common in between 3 factorization? Here we have 3. Okay, then HCF will be 3, highest common factor, and LCM we put all the number which we have. For example, 2 square multiply, we have 3, we have 5 and we have 7. So 4 3 ja 12, 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, 12 5 ja 60 and 67 ja 42. So 420 answer. SCF equal to 3 and LCM will be 420. That's it. Okay.